Yes or no? Okay, let me give you one question like that. Yes, Ali, when you are having your exam? I'm day after tomorrow. Okay, on Wednesday, right? Yes, ma'am. Okay, no worries. So Ali, today we will be taking the remaining question of circle and the next topic, that is parabola, that also I will start. And hyperbola, it's exactly like the ellipse. ओके, तो जो हाइपरबोला का एक मैं नोट्स सेंड करूंगी, जस्ट गो थ्रू कर लेना, उसमें जस्ट फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब अलग थोड़े से डिफरेंट है इलिप्स से। बाकी सब कुछ जैसे हम इलिप्स में फाइंड कर रहे होते थे वैसे ही हाइपरबोला में भी फाइंड करेंगे। आई विल बी सेंडिंग द नोट्स फ्रॉम दैट। ओके, बिकॉज वेडनेसडे वाले क्लास में व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग द फॉर द क्लास, दैट टाइम यू विल बी डन विद द एग्जाम, राइट? Yes, ma'am. Okay. Since hyperbola is exactly like the ellipse, that's why I'm telling you, I'll be sending you the notes. You check it. Are you understanding or not? Okay. Yes, ma'am. Or yeah, tomorrow you can have one class. Yeah, inform our team that tomorrow you need one class. Okay. Tomorrow you will be able to get one class because I'm also available tomorrow. And if you will be available, then you will be able to take the class. Are you available tomorrow? Yes, ma'am. Okay, then inform our team. Okay, now only that one more class is needed. Okay, so yes, I am taking the remaining question of circle. And yeah, I was talking with about these questions. Find the equation of the circle passing through the points 4, 1 and 6, 5, whose center is on the line 4x plus y is equals to 16. Please do it now. Please do it. Ali and Alina, please do it.
And yeah, if you can't, please let me know quickly so that I have few more questions. Okay, so within 5 minutes, just let me know. Are you doing it or we need to discuss it? Yes, Ali. Are you available tomorrow, 8:30 Indian Standard Time or 7 p.m. UAE time? Like this, both are same, right? There is a gap Yes, of, ma'am. yeah. Ma'am, So, yes. ma'am, I will be available from 9 p.m. IST. Okay, you will be available from 9 p.m. IST, but from 9 p.m. Before that, you are not available, Ali. Are you having No, any other? ma'am. Okay. Indian Standard Time, right? 9 p.m. Yes, ma'am. Okay. Are you able to do this question? The same, exactly same type of question we have discussed in the last class. Yes, ma'am. Alina, are you getting it? I'm doing. Okay, you are doing it. Do it.
Okay. Yes, Ali and Alina. Okay. You are doing it. I am giving the brief of this. You just check it. Are you going in the same direction? Okay. सबसे पहले हमें assume करना होता है standard form of the circle. Okay. That is x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. Just check it. Are you moving in the same direction or not? Okay. Find the equation of a circle passing through this point and this point. So at first we will say that it is passing through. Okay, since it is passing through 4, 1, तो x के प्लेस पे हम 4 पुट करेंगे एंड y के प्लेस पे 1 एंड हमें एक इक्वेशन मिलेगा, राइट? Then we will say that it is also passing through 6, 5. Then the original equation जो हमारे पास है, okay, equation number 1. ओके, अब उस इक्वेशन में x के प्लेस पे 6 पुट करेंगे, y के प्लेस पे 5 पुट करेंगे और हमें एक और न्यू इक्वेशन मिलेगा, राइट? अलियन अलीना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। उसके बाद whose center lies on this line, whose center lies on this line, इसका मतलब है यहाँ हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन है सर्कल का, यहाँ पे h कॉमा k ये सेंटर के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो और एक हमारे पास इक्वेशन आ गया दैट h कॉमा k किस पे लाई कर रहा है, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पे। तो हमें एक और इक्वेशन मिल गया दैट इज 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। अब बस हमें इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 को कैसे भी सॉल्व करके एच के एंड आर का वैल्यू फाइंड करना है, राइट अलियन अलीना? Um, ओके, यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? yes, ma'am. लेट्स डू दिस क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, एक इक्वेशन है, हम एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस हमें पता है दैट इज 5, whose center lies on the x axis। ओके, सेंटर कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। सेंटर कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसा दिखता है, एक्स कॉमा जीरो, यस और नो, और ए कॉमा जीरो, और एनीथिंग वॉट एवर विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई विल बी जीरो, यस और नो, Yes, यस ma'am. और एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ले, ओके, वाई हमेशा जीरो होता है एक्स के प्लेस पे जो भी हो, एक्स के प्लेस पे जो भी हो वाई हमेशा जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट में वाई जीरो होता ही है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ भी चलो एक इक्वेशन अज्यूम कर लेते सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, let's assume that our equation of the circle is x minus h whole square, okay, y minus k whole square is equals to r square। यहाँ हमें अच्छे से पता है h कॉमा k क्या है, कोऑर्डिनेट है सेंटर का, ओके। बट यहाँ तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में whose center lie on x axis। तो अगर सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है मतलब के तो यहाँ पे जीरो होगा, यस और नो? Yes, ma'am. आर यू अंडरस्टैंडिंग अली? Yes, ma'am. वी कैन पुट k इज इक्वल्स टू जीरो ओवर हियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, जस्ट h एंड r का वैल्यू। ओके, r भी दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस भी दिया हुआ है। अब बस हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, h का वैल्यू। जैसे ही हमने h फाइंड कर लिया हम बता पाएंगे कि हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या है, ओके। तो चलो देखते हैं और कोई डेटा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस दिस, सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड passes थ्रू द पॉइंट 2, 3। मतलब जो हमारा सर्कल है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, जो हमारा सर्कल है वो एक एक कोई पॉइंट है 2, 3, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ओके। तो अगर हमारा सर्कल 2, 3 से पास कर रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि सेंटर से ये जो पॉइंट ए है बी है वॉट एवर, क्या हम कह सकते हैं कि सेंटर ओ से ये जो पॉइंट ए है या जो भी है इसका डिस्टेंस
ओ ए ये रेडियस के इक्वल होगा, यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो चलो इक्वेशंस क्रिएट कर लेते हैं. So at first we are having this standard form of the equation of a circle. Here we will substitute k value as a 0. Then we are having x minus h whole square. Okay. Plus just y square is equals to r. R we know it is 5 square. Okay. ये एक इक्वेशन है हमारे पास. और अभी अभी हमने रियलाइज किया कि दैट डिस्टेंस बिटवीन ओ ए is nothing but just the radius of the circle, right? Yes, ma'am. डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन यूज, दैट इज ओ का कोऑर्डिनेट h कॉमा k नहीं है, h कॉमा 0 है. ओके, बिकॉज द सेंटर लाइज ऑन द x एक्सिस. सो एंड द a कोऑर्डिनेट इज 2 कॉमा 3. डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करने वाले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. लेट्स यूज इट. एंड यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम h का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, राइट? अली एंड अलीना, Yes, ma'am. I'm leaving this question. You will be able to finish it, right? Right? Yes, ma'am. Alina, will you be able to finish it? Yes, ma'am. Okay, let's do the next question. Find the equation of a circle. Passing. Yes, Ali, that day when I have sent you the homework by mistake, have written there hyperbola. It will be ellipse. Okay. The homework was from ellipse only, not hyperbola. Okay. Okay, ma'am. Passing through 0, 0 and making intercepts A and B on the coordinate axis. Let's see what the question says. Find the equation of a circle. Okay, again we are having a circle making intercept. इंटरसेप्ट का मतलब होता है इंटरसेक्ट. ये जो सर्कल है ये हमारे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर टच कर रहा है. ओके, इंटरसेप्ट दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट एंड वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है. बेसिकली हमारा जो सर्कल है कुछ ऐसा दिखता है. Okay, even if it doesn't looks like a proper circle, assume it's a circle only. Okay, so circle I have created. Here it is creating intercept on the y-axis, intercept on the x-axis, and it is passing through the origin. Can you see it? Yes, ma'am. Find the equation of a circle passing through 0, 0. So accordingly, I have drawn a circle which is passing through 0, 0 and making intercept. This is A and this is B. Getting it? Aliyan Alena, कैसा दिखता है हमारा सर्कल? Are you understanding? Yes, ma'am. तो अभी भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म यही अज्यूम करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर ओके प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. हमें पता है यहाँ पे h कॉमा के क्या है, सेंटर. सेंटर का कोऑर्डिनेट है एंड r क्या है, रेडियस है. हमें दिया हुआ क्या है इस सर्कल में,
हमें ये पता है कि ये सर्कल कौन से पॉइंट को टच करके निकल रहा है, बस हमें यही पता है इस क्वेश्चन में। देखो ध्यान से देखो, हमें ये पता है कि ये जो सर्कल है अगर एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, इंटरसेप्ट का मतलब है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और वहां पे कोऑर्डिनेट क्या है a,0, एंड वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब कि यहाँ बी इतने डिस्टेंस पे कट करके निकल रहा है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या है, 0,b। एम आई मेकिंग सेंस टू बोथ ऑफ यू? Yes, ma'am. तो अब तो ये हमारा वही वाला क्वेश्चन हो गया कि एक सर्कल है हमारे पास जो जो a,0 इस पॉइंट को टच करके निकल रहा है, 0,b इस पॉइंट को टच करके निकल रहा है, 0,0 इस पॉइंट को भी टच करके निकल रहा है। ओके, थ्री इक्वेशंस हम यहां से फ्रेम कर सकते हैं, राइट? द गिवन सर्कल passes through origin. Zero, zero. That means x, at the place of x, we will be substituting 0. At the place of y, we will be substituting 0. And we are getting h square plus k square is equals to r square, right? Any confusion so far? No, ma'am. Okay, here I am writing the next part. Okay, and the given circle, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आने वाला है सर्कल का, उसमें a एंड b दिखेगा क्योंकि दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, आवर सर्कल्स इक्वेशन will is going to contain a and b. Okay, and the givens, and also the given circle passes through a comma 0. That means in the original form we will be writing a at the place of x. सी, हमें यहाँ भी हमारा पर्पस सेम है, एच के एंड आर का वैल्यू हम कैसे भी फाइंड कर ले। ओके, प्लस 0 minus k whole square is equals to r square. So we are getting here a minus h whole square plus k square is equals to r square. This is equation number 3. And one more equation we will be creating from here. Are you understanding, Ali and Alina? Yes, ma'am. Ma'am. तो जब भी इंटरसेप्ट दिया हो सकता है एक्चुअल एग्जाम में ए एंड बी के प्लेस पे इंटरसेप्ट 2, 2, 3 या फिर 5, 10 कोई नंबर्स दिया हो, कंफ्यूज नहीं होंगे, इंटरसेप्ट की हेल्प से हम पॉइंट निकालेंगे। ओके, एंड इट इज जस्ट द सेम क्वेश्चन विच वी वर डिस्कसिंग at first in this class, okay, which you were solving by yourself. So 0 comma b, that means x के प्लेस पे हमें 0 पुट करना है, एंड y के प्लेस पे हमें b पुट करना है। यहाँ पे वी आर गेटिंग h स्क्वायर प्लस b माइनस k square is equals to r square. This is equation number 4. Okay, now we have to solve 2, 3 and 4 to get h and k value, h, k and r value. हमारा जो h वैल्यू आएगा, जो k वैल्यू आएगा, जो r वैल्यू आएगा, ये a एंड b के टर्म्स में होगा, बट दैट इज कंप्लीटली ओके। सो या लेट्स डू इट। ओके, what can we do? At first we can do the comparison of equation 3 and equation 4. Okay, comparing, या फिर you can also take the comparison with 2 and 3. Okay, 2 and 3, 2 and 4, like that. Let's compare 2 and 3 because that is also r square. I'm taking equation 2 and 3 and I'm comparing it.
ओके, बोथ दोनों के ही राइट साइड में आर स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। गेटिंग इट? देखो यहाँ से तो लग रहा है ये बहुत सिंपल हो गया। के स्क्वायर तो अभी ही कैंसिल हो रहा है, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. वी आर गेटिंग एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलो एक्सपैंड कर लेते हैं, ए स्क्वायर ओके 2ab बी स्क्वायर एच स्क्वायर गॉन, वी आर हैविंग a कॉमन, a माइनस 2h 0। ओके, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, या तो a 0 है या फिर a माइनस 2h 0 है, और यहाँ से h का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, a/2। यस और नो? यस और नो? आर यू गेटिंग इट? How I have found the h value earlier, Alina? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ इक्वेशन 2 और 4 को हम कंपेयर ऐसे ही करने वाले हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है हमारा इक्वेशन 2 में, एंड 4 में हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर प्लस बी माइनस के। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। ओके, इट्स नॉट दैट टाइम टेकिंग लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल। ओके, सिंपलर देन द फर्स्ट वन। नाउ विल बी डूइंग बी स्क्वायर ओके माइनस 2bk प्लस के स्क्वायर, here के स्क्वायर गॉन, यू कैन टेक आउट कॉमन, कॉमन फैक्टर हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें k का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से। विल बी गेटिंग b माइनस 2k दैट इज 0, सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग इधर b इज 0 और b माइनस 2k इज 0, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू b/2। मतलब हमें h एंड k का तो वैल्यू मिल गया, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ओके, वी गॉट h एज अ a/2, वी गॉट k एज अ b/2। अब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि बहुत ही सिंपल है, दैट इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, h के प्लेस पे हम a/2 पुट करने वाले हैं, के प्लेस पे हम b/2 पुट करने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ से हमें आर स्क्वायर डायरेक्टली मिलेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4। यस और नो? अंडर रूट करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा दिख रहा था, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, लेट्स सी व्हाट वाज द स्टैंडर्ड फॉर्म, x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. Okay, let's take the standard form, let's put the value of h, k and r. r square as it is हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, that is a square plus b square is by 4 x minus a/2 whole square plus y minus b/2 whole square. Got it? Earlier ना लेना, ऐसे ही नहीं लीव करेंगे, इसे एक्सपैंड करके जो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगा सिंप्लीफाई कर देंगे, और उसके बाद फाइनल स्टेप लिखेंगे। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. आर यू गेटिंग इट अर्ली? Yes, ma'am. Don't leave your answer like this. Okay, you have to expand it, and you have to check if any simplification is possible. So we are supposed to do the simplification also. Let's take the next question. Find the equation of a circle with center 2 comma 2 and passes through 4 comma 5। passes through means हमारा जो सर्कल है वो पास कर रहा है इस पॉइंट से 4 comma 5 से। ओके, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब h comma k दिया हुआ है, यस, एंड passes through the point 4 comma 5, so it passes through the point 4 comma 5। ये तो और भी सिंपल है, यहाँ से तो हमें दिख रहा है कि हम रेडियस
डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं, यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. ओके, एच एन के तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड आर भी यहाँ पे फाइंड करना बहुत सिंपल है. आई एम गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू. Alina, are you getting it? Are you getting it, Alina? Yes, ma'am. I'm gonna scroll up. Yeah, I will scroll up. Okay, the previous answer you have given, Ali. I have not checked the chat box. Okay, yeah. Is it visible now? Ma'am, no, the previous question's answer. Okay, the previous one, this one, Yes, ma'am. Yours one little up. uh, from here. Yes, ma'am. No, yes, ma'am. Ma'am, a little down. Hmm. Is it okay? Yes, ma'am.
Ma'am, can you scroll down? Is it okay, Alina? Yes, ma'am. Okay. Done, ma'am. Okay. Okay, you are done. Shall I show this part now? Yes, ma'am. Ma'am, can you scroll down?
Done, Alina. Yes, ma'am. Okay, the next question I said that you will be able to do it by yourself because here center is given and for finding the radius, we understand radius is nothing but just the distance between the center and any point on the circle. Here, one of the point on the circle is given. Okay, so easily you will be able to find the radius. And from there, you will be able to find the equation of a circle. Now, the last question, which is important, which I want to take over here is, does the point minus 2.5 comma 3.5 lie inside, outside, or on the circle? X square plus y square is equals to 25. Okay. Yes. Alina, are you copying this the previous one, or you are done? I can start the explanation of the next one. Ma'am, can start. Okay. So here the question says that, does the point this lie inside, outside, or on the circle? Okay. So whenever I am drawing a circle on the screen, okay, on any plane, whenever you draw a circle, our plane get divided into three part. One is the interior part of the circle, another is exterior part of the circle, and the next is this on the circle. अगर इस स्क्रीन पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओके, तो ये जो स्क्रीन है ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक है इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, एक एक्सटीरियर और एक ऑन द सर्कल. अब इस स्क्रीन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लोकेट करूं, जैसे कि मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिया, ओके, तो चांसेस ये है कि जो भी पॉइंट मैंने लोकेट किया है या तो वो एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा सर्कल के, या फिर इंटीरियर पार्ट में लाई करेगा, या फिर सर्कल के ऊपर लाई करेगा. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो हमें यहाँ पे यही बताना है कि ये जो पॉइंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है -2.5, 3.5, ये जो पॉइंट है सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है, आउटसाइड लाई कर रहा है, या फिर ऑन द सर्कल लाई कर रहा है? बताओ कैसे बताएंगे हम? क्या हमें ये समझ में आ रहा है? ये जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया हुआ है यहाँ से तो हमें समझ में आ रहा है कि सेंटर क्या है एंड रेडियस क्या है. इफ आई आस्क यू अली एंड अलीना, इस सर्कल के इक्वेशन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इस सर्कल का रेडियस क्या है एंड सेंटर क्या है. यस. व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द सेंटर? ऐसे इक्वेशन हमने सॉल्व किए हैं जहाँ पे हमें सेंटर एंड रेडियस बताना होता था. अली एंड अलीना, यस. Can we say radius is 5? Can we say center is 0, comma 0? Yes or no? Yes or no? Yes, ma'am. Are you getting it, Alina? No? Are you there, Alina? Yes, ma'am. Are you getting it? Ma'am, doing it.
Okay, you are doing it. Are you getting it? We don't have to do anything. First, I am just asking you what is the center and what is the radius. So can we say center is 0, comma 0 Yes, ma'am. and radius is 5? Yes, ma'am. Okay. Now we have to check whether this point minus 2.5 comma 3.5 lie inside this circle, outside this circle or on the circle. तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के इनसाइड इंटीरियर पोर्शन में अगर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस निकलेगा ये रेडियस से स्मॉलर होगा. कैन वी से दैट OA विल बी स्मॉलर देन रेडियस? कैन वी से दैट? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, and if we are having a point on the circle, okay, on the circle, if we are having a point, that point's distance from the center, that is nothing but just the radius of the circle. और अगर कोई पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करता है, ओके, तो इस पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस निकल के आएगा ये रेडियस से बिगर होगा. यस और नो? Yes, sir. तो अगर हमें पूछा जा रहा है कि देखो एक पॉइंट है, ओके, एक कोई पॉइंट है माइनस व्हाट इज द पॉइंट -2.5 कॉमा 3.5, चेक करो और बताओ कि ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है या फिर सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है. तो हम क्या बोलेंगे, चलो इस पॉइंट का सेंटर से, ओके, सेंटर H कॉमा के, जो कि हमें ऑलरेडी पता है इस केस में, सेंटर से डिस्टेंस निकाल के देखते हैं. अगर ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा OP का ये रेडियस से बिगर हुआ तो मतलब पॉइंट्स सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं. अगर ये रेडियस के इक्वल हुआ मतलब ये जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं. अगर OP जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, डिस्टेंस OP ये रेडियस से स्मॉलर नंबर आ गया, मतलब ये जो पॉइंट P है सर्कल के इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है. एम आई मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. Alina, are you getting it? Yes, ma'am. ओके, तो हमें यहाँ पे पता है सेंटर, ओके, H कॉमा K. हमें इस केस में पता है दैट इज H कॉमा K इज नथिंग बट जस्ट 0 0. We will be finding the distance, okay, if you are saying this is a point P, we will be finding, okay, OP. Let's find OP by using distance formula which you have learned in class 10. So OP is O, ध्यान से देख लो, O 0 0 है एंड P हमने अज्यूम किया जो गिवन पॉइंट है √x2 - x1. सो 0 माइनस -2.5 या तो ऐसे लिखो, विल बी हैविंग 2.5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 3.5 होल स्क्वायर. -3.5 को होल स्क्वायर करे या फिर 3.5 को स्क्वायर करे, इट्स द सेम थिंग. ओके, सो वी विल बी गेटिंग 625. Just a moment, I am placing the decimal. 1225, 6.25, 12.25. This is what we are getting. चलो देख लेते हैं इन दोनों को ऐड करके. तो 12.25, 6.25, that means 18.50. हमें स्क्वायर रूट निकालना है. चलो इस 18.50 को हम √1850/100 भी तो लिख ही सकते हैं. यस और नो? Yes or no? Yes, Aliena, ma'am. okay, now we will be finding the square root just to get the idea कि ये जो नंबर हमें यहाँ से मिलने वाला है, ये जो हमारा रेडियस है, क्या है रेडियस? ऑलरेडी हमें पता है रेडियस 5 है, तो उससे छोटा लाइक स्मॉलर नंबर वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम योर बिगर नंबर, और एग्जैक्टली वी आर नॉट गेटिंग. ओके, स्मॉलर और बिगर दैट ओनली वी नीड टू चेक. सो बाई 10 तो हमें पता है, बस 1850 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से वी आर फाइंडिंग.
Okay, so by using long division method, we will be pairing from the last. Then we will be reading 1 times 1, 2 times 4, 3 times 9, 4 times 16, 4 times 16. Okay, 250 we are getting. You are able to recall the method for finding the square root by long division method, right? Yes, ma'am. Okay, so 448 we are having over here. Now beside 8 we need to write a number, maybe 1, maybe 2, maybe 3. Okay, I'm checking with 3. 3 times 9, 8 3 times 24. Yeah, 3. Okay, 249. Okay, then whatever it is coming. So basically, after that decimal will be there. So 43 point something will be there. Okay, 43 point something will be there. Divided by 10 is there. That means 4.3 and all we are getting. Yes or no? Ali and Alina. Yes, ma'am. ओके ये जो नंबर हमें मिला, द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी, ये तो हमारे रेडियस से छोटा है. 4.3. रेडियस हमारा क्या था? 5. तो अगर रेडियस से छोटा है तो ये जो पॉइंट पी है ये सर्कल के बाहर लाई करेगा या फिर सर्कल के इंटीरियर पार्ट में लाई करेगा? अली एंड अलीना. Yes, ma'am. पी सर्कल के इंटीरियर पार्ट में लाई करेगा या एक्सटीरियर पार्ट में? Ma'am, Exterior. exterior. एक्सटीरियर मतलब हमारा एक सर्कल है, उसके एक्सटीरियर पार्ट में कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पी का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से छोटा आएगा, राइट? Yes, ma'am. ये जो ओपी है ये रेडियस से छोटा दिख रहा है, राइट? Yes, ma'am. यस. यस अली. Yes, ma'am. दिस ओपी इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल. No, ma'am. If OP, this point P is lying in the exterior part, as you said, the distance from O to P will be bigger than the radius, yes or no? Yes, ma'am. And we are getting the distance between O to P is smaller than the radius. That means P is lying somewhere in the interior part, yes or no? Getting it? Yes, ma'am. Ali, are you getting? Yes, ma'am. P lies in the interior part of the circle. It's just a logic. It's not a concept. ये just एक logic है कि O से एक सेंटर है हमारे पास सर्कल का. ओके, एंड सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट का सेंटर से जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो वो रेडियस बोलते हैं हम. ओके, अगर वही पॉइंट, अगर कोई एक रैंडम पॉइंट है सर्कल के इंटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का अगर सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे तो हमेशा रेडियस से कम आएगा. इंटीरियर पार्ट का इंटीरियर पॉइंट, if the point is lying in the interior part of the circle, then the distance of that point from the center will be smaller than the radius. And if the point is lying in the exterior part, then the distance of that point from the center will be larger than the radius. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so be careful. This point P, which is given to us, is going to lie in the interior part. Why? Because the distance OP is 4.3 and our radius in this circle was 5. Okay, we have written over here that the radius is 5. Okay, so yes, the point is lying in the C. Radius 5 we have written already. Is it clear to both of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we are done with circles. Okay, now we'll be starting the discussion of parabola.
Okay. Now we were discussing on day 1 that whenever a plane is cutting this conical shape, from there this conic section chapter we are getting. Okay, this angle over here was alpha. Okay, and if the plane will cut, let me draw the figure. This is also alpha. Just a second, let me draw it. Rather, I must draw like this because it can create confusion. Yeah. अगर ये जो एंगल है, ओके, जो हमारे कोन के एक्सिस के साथ प्लेन के एक्सिस का ये जो एंगल बीटा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ओके, अगर ये बीटा अल्फा के इक्वल होगा, ओके, तो हमें यहाँ पे कोन मिलेगा, सॉरी, पैराबोला मिलेगा. Okay, the real life example, you can check it by cutting it, you will be getting the parabola. Okay, तब हमें यहाँ पे पैराबोला मिलता है. जब ये अल्फा एंड बीटा दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है तब हमें पैराबोला मिलता है. ओके, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि जब 90 डिग्री पे प्लेन कट करके निकलता है तो क्या मिला था हमें, एक सर्कल मिला था. ओके, जब भी प्लेन कोन को 90 डिग्री पे कट करके निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा. और अब मैं बोल रही हूँ कि ये जो एंगल है अल्फा, ओके, ये जो वर्टिकल यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है अल्फा, अगर बीटा अल्फा के इक्वल होगा तो हमें क्या मिलेगा, पैराबोला मिलेगा. आर यू गेटिंग इट, अली एंड अलीना? Are you getting it? Yes, ma'am. Okay, on day 1 we were having the discussion. ऐसे क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं या फिर ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस में आ सकते हैं. ठीक है, नाउ पैराबोला, मैथमेटिकली हम ये समझते हैं पैराबोला उन सारे ही पॉइंट का लोकस है. मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है हमारे पास जो एक जैसा एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. ओके, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मिलके क्या करे, एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे एक फोकस है. ओके, ये जो पॉइंट है, सपोज पी, ये जो पॉइंट पी है इसका फोकस से डिस्टेंस, ओके, सपोज एस इज द फोकस, फोकस से डिस्टेंस, एंड एक एक हमारे पास लाइन है जिसे हम डायरेक्ट्रिस बोलेंगे. ओके, a fixed line we are having. तो ये जो सारे पॉइंट है पी क्यू आर एस टी यू, ये सारे ही पॉइंट एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं ये सारे पॉइंट,
ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस S से एंड P का डिस्टेंस दिस इस लाइन से, ओके, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये अगर M है तो यहाँ पे PS एंड PM इक्वल है आपस में। सिमिलरली ये जो Q पॉइंट है इसका डिस्टेंस S से एंड Q पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस M पे ही जाके नहीं मिलेगा, ओके। Q पॉइंट Q का डिस्टेंस इस लाइन से, ओके, ये जो डायरेक्ट्रिक्स वाला लाइन है इस लाइन से, तो द डिस्टेंस मे बी इट विल लुक लाइक दिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज ये N है, तो ये दोनों मिलके क्या कर रहे, ये QS एंड QN, दिस डिस्टेंस इज सेम, एंड ये जितने सारे पॉइंट्स है ये ऐसे सेम बिहेव कर रहे हैं, इन सारे ही पॉइंट्स का फोकस से एंड इस फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस है। ऐसे पॉइंट्स को जैसे ही हमने ज्वाइन किया तब जाके हमें पैराबोला मिलता है। गेटिंग इट अलियन अलीना? गेटिंग इट? Yes, ma'am. ओके, पैराबोला हमें कैसे मिला, ओके, कौन से कैसे मिला, कैसे कट करके निकाले, बट हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो पैराबोला है इसके ऊपर जितने पॉइंट्स है ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। कैसे पैटर्न को, मतलब इस पैराबोला के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं इन सारे ही पॉइंट्स का डिस्टेंस फोकस से, जो डिस्टेंस, अगर फोकस से ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो इस लाइन से भी ये 5 सेंटीमीटर ही मेंटेन कर रहा है। अगर फोकस से ये क्यू का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो ये क्यू लाइन से भी 2 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे, ये दोनों डिस्टेंसेस सेम मेंटेन कर रहा है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो PS बाई PM है ये क्या है, 1 है। कैन वी से दैट, क्योंकि दोनों ही इक्वल है तो रेशियो निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट? या फिर QS बाई QN 1 है, कैन वी से दैट अलियन अलीना? Yes, ma'am. ओके, तो ये जो PS बाई PM है ना, रैंडम पॉइंट P का फोकस से डिस्टेंस एंड द सेम रैंडम पॉइंट P का फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, इसे हम कॉनिक सेक्शन चैप्टर में इसेंट्रिसिटी भी कहते हैं, ओके। तो इसेंट्रिसिटी, हर बार हमें इसेंट्रिसिटी निकालना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। जब भी हमें इसेंट्रिसिटी निकालना होगा ना क्विकली, हम हमारे पास फॉर्मूला होगा, बस हम वैल्यू पुट करेंगे, हमें इसेंट्रिसिटी मिल जाएगा। बट इस इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो, हमारे पास जो फिगर है उस फिगर के ऊपर लाई करने वाले रैंडम पॉइंट्स का फोकस से जो डिस्टेंस है, ओके, उसका एंड फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है दोनों का रेशियो, इससे हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इस रेशियो का नेम है बेसिकली, एंड द नेम इज इसेंट्रिसिटी, ओके। हमारे पास ये जो पैराबोला है यहाँ पे क्या है, इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होता है, इसे हम E से भी रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 होता है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है ये जो PS PM के इक्वल होता है। गेटिंग इट? Are you getting it, Alian Alina? ओके, इलिप्स में इसेंट्रिसिटी 0 एंड 1 के बीच में होता है फॉर इलिप्स, एंड हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी इज बिगर देन 1, ओके। ये भी MCQ क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ओके। जस्ट ऐसे ही पैराबोला में इसेंट्रिसिटी विल बी ऑलवेज डैश, it will be 1. Ellipse में eccentricity will be lying in between 0 and 1, and hyperbola eccentricity will be bigger than 1. Okay, so yeah, let's continue. Now we are discussing about parabola. तो बेसिकली हमारे पास 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला के, और मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, क्विकली चलो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ओके। We will be discussing, if we will get time, in detail. Basically you need to understand how to solve the questions first. So
अगर हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो हमारा पैराबोला कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है। ओके, इस पैराबोला, ये जो एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस है पैराबोला का, यू कैन सी एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ओके, लेट मी राइट ऑल द डिटेल ओवर हियर। यहाँ पे फोकस क्या होता है, यहाँ एक पॉइंट लाई करता है जिसे हम फोकस कहते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0। ओके, तो फोकस ऑफ द पैराबोला, नोट इट डाउन, फोकस इज a,0। अगर हमारा पैराबोला ऐसा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो फिगर ऐसा दिखेगा। ओके, यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0। अब मैंने एक फिक्स लाइन की बात की थी जिसे हम क्या बोल रहे थे, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक फिक्स लाइन होता है। यहाँ ओरिजिन होता है जिसे हम वर्टेक्स, ओके, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला भी कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड, या ये ओरिजिन से जो फोकस का डिस्टेंस है ये a यूनिट है। ओके, डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसा फिक्स लाइन है जो ओरिजिन से a डिस्टेंस पीछे की तरफ है। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी a ही है। ओके, अगर हमसे पूछा जाए कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, कैन वी से दैट हियर द कोऑर्डिनेट विल बी -a,0? कैन वी से, अली एंड अलीना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अगर हमसे पूछा जाए ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पहले हमें हमें लॉजिकली पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन है, इक्वेशन, अगर हमारे पास एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके, सपोज कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 2 से। ओके, इस लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, इस लाइन का इक्वेशन हम बोलेंगे y इज इक्वल्स टू 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम x जो भी ले रहे हैं y हमेशा 2 ही रह रहा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is y is equals to k. K means a constant. Are you getting it, Ali and Alina? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, इस ये जो लाइन है हमारे पास, इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2। क्यों y इज इक्वल्स टू 2? क्योंकि हम यहाँ पे पैटर्न नोटिस कर रहे हैं कि x का कोऑर्डिनेट जो भी है लेकिन y तो 2 ही है। x का कोऑर्डिनेट जो भी है लेकिन y तो 2 ही है। x का कोऑर्डिनेट जो कुछ जो भी नंबर है बट y इज 2। ओके, x का कोऑर्डिनेट जो भी है यहाँ पे, बट y इज 2। और यहाँ से हम बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है इसका इक्वेशन y हमेशा 2 है, y इज इक्वल्स टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो आज के बाद से याद रखना कि जब भी हमारे पास कोई लाइन होता है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, अगर अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू k। और अगर हमारा लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे, मतलब ये एक्स एक्स एक्सिस को कट करके निकल रहा है किसी पॉइंट पे। अब यहाँ पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी है बट x विल बी सेम। y इज दिस, y इज दैट, x विल बी सेम। ओके, so here we will say equation of a line parallel to y axis. Okay, equation of line parallel to y axis is, this one is x equals to k. Got it? Got it, Ali and Alina? Yes, ma'am. ओके, अब चलो हमारे पैराबोला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये जो लाइन है
ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब x इक्वल्स टू माइनस ए, ये इक्वेशन होगा। क्यों माइनस ए? क्योंकि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है x को माइनस ए पे टच करके निकल रहा है। ओके, वर्टेक्स हमारा जो पैराबोला है, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है? 0 0। ओके, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ओके, ये सारे ही पॉइंट्स याद रखने होंगे। अली, यू कैन अंडरस्टैंड। हमें बस ये सब याद रहने चाहिए, हम बस फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें जो पूछा पूछा होगा क्वेश्चन में हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, दीज आर जस्ट द डिटेल्स, बट बेसिकली फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी नीड ऑल दिस डेटा। ओके, equation of directrix we have done, focus done, equation of the axis, yeah, equation of axis। तो क्योंकि हमारा ये जो एक्स एक्सिस है ये है एक्सिस पैराबोला का, एक्स एक्सिस है हमारा पैराबोला का एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, वट एवर विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, वाई विल बी 0। सो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 होता है। याद रखना, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 होता है एंड y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होता है। एम आई मेकिंग सेंस टू बोथ ऑफ यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है एंड x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल्स टू 0। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, basically when we will join two points on the parabola like this, okay, pq, this is called the latus rectum। okay, इसका लेंथ का फॉर्मूला होता है 2a, basically 4a, not 2a। okay, note down all the formulas, we are done with the first one। now I'll be writing the other I'll be showing you the other cases of the parabola and quickly I'll be writing the formulas as well। तो हमारा जो पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। यहाँ पे पैराबोला का एक्सिस क्या था? एक्स एक्सिस था। फोकस क्या था? a,0 था, क्योंकि फोकस हमारा एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ लाई कर रहा था। ओके, फोकस इज a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था? डायरेक्ट्रिक्स एक फिक्स लाइन का नाम है जो कि पैराबोला का जो ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस होता है उतने ही डिस्टेंस पीछे डायरेक्ट्रिक्स होता है। ओके, उस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है तो इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल्स टू k। यहाँ हमारा कांस्टेंट क्या है? माइनस ए है। ओके, वर्टेक्स 0 0। इफ यू आर डन विथ ऑल दिस फॉर्मूला प्लीज टेल मी, आई विल बी स्क्रॉलिंग डाउन। कैन आई स्क्रॉल डाउन? yes, Ali and Alina, are you done? No? Okay, do it। Are you done, Ali and Alina, with the formulas? Yes, ma'am. Okay, let me show you the other cases as well quickly। सो हमारा पैराबोला, ये जो केस मैंने दिखाया था दैट इज वन ऑफ द केस। ऐसा भी हमारा पैराबोला होता है। यहाँ पे बस हमें ये ध्यान में रखना होगा, अब हमारा फोकस क्या है?
माइनस ए कॉमा 0। और अब हमारे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? दैट इज x इक्वल्स टू a। गेटिंग इट अलीना? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी भी 4 है, 4a है, ये चेंज नहीं हो। ओके, this is the second case. Okay, from the figure it is clearly visible that we are having the focus now as a minus a comma 0। और अब हमारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी भी हमारा 4a है। ओके, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस अभी भी हमारा y इज इक्वल्स टू 0। और एक हमारा पैराबोला थर्ड केस में ऐसा दिखता है। इस बार हमारा फोकस क्या होगा? 0 कॉमा a। ओके, वर्टेक्स अभी भी ओरिजिन है। इस बार हमारा डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ओके, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू माइनस a। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। गेटिंग इट अलियन अलीना? बाकी सारे डेटा एज इट इज। इस बार हमारा एक्सिस क्या है पैराबोला का? y एक्सिस है। ओके, इक्वेशन अगर एक्सिस का पूछे तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू 0। गेटिंग इट? Yes, ma'am. एंड द लास्ट केस, हमारा पैराबोला ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग भी हो सकता है। और इस बार हमारा क्या होगा फोकस? बस हमें ध्यान में रखना होगा फोकस हमारा क्या है। ओके, द इक्वेशन आई हैव नॉट रिटन। द इक्वेशन इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax। okay, x square is equals to 4ay. This is the standard form over here, and the last one is having the standard form as a x square is equals to minus 4ay। यहाँ पे हमारा जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा? 0 कॉमा माइनस ए। जो फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या होगा? y is equals to a। okay, and the axis of this parabola is still y axis। ओके, अगर y एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो वो तो हमें पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a हम लेंगे। सो या, दीज आर ऑल द केसेस। ओके, yes, Ali and Alina, these are all the standard forms questions we will be doing in the next class।